polymer technology, and waste to wealth strategies for applications in the areas including but not limited to electromagnetic interference, EMI shielding, microwave absorption, etc. He has written large number of papers, research papers, publications, etc. Sir, thank you very much for accepting our request or for delivering this very important topic today. He is a recipient of prestigious CSIR Young Scientist Award in 2013 in the area of engineering science and Raval Institution's annual Emittance Award 2014. He is a life member of MSI, MRSI, PPS, and many other national and the international bodies. Thank you, sir. Thank you very much. We have with us our Honorable Shri B.N. Dixit, Director, sir. Sir, would you like to speak 2 words, please? Yes, uh, it is matter of very great pleasure that I got opportunity to be part of this very program after a long time, and this program is always very successful program. At my end, the voice is very low. I am not able to hear actually This what program is Badri very sir is saying. successful program for all the scientists as well as the participant and the metrology officers who are joining this very program. And today the topic is also very important, which is not directly relevant to the meteorological department, but indirectly it is very much important because with these very things that a laboratory may be cleaned and how to maintain the best laboratory practices that may be followed. So that best laboratory practices is very important things in the laboratory life, and wherever where the national standard is there, reference standard is there, secondary standard, working standards are there. So there are all such type of program that how to make the laboratory in the best way so that your equipment may perform well and for the longer time. So that is the uh, things that will come from this very programs for the all our legal metrology laboratories, and I wish for the success of the programs, and I hope that everybody will get the maximum knowledge from this very program. Thank you, Astoji. Thank you, Dr. Soni Saab. Thank you, Astoji. Thank you very much, sir. Thank you for your kind and motivating words. Thank you very much. Now, I would like to request Dr. Seni to kindly deliver his lecture and enlighten us with his vast knowledge and experience. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, Ashutosh sir. Thank you, Badri sir, for your kind words and the precious information in a very crisp manner that you shared about why this topic is important, why metrology is important, why standards are important, and what is the importance of this topic. So, with this, I think I am just about to start these things, and I always say that if you look at the title, it is from waste to resource, metrology and sustainable waste to wealth practices. So, what I'll try to link up all these things to tailor a story which probably makes you more curious, more interested, and more involved about the subject. What exactly is the problem, and what exactly is our role? Generally, what happens, whatsoever we are doing, we think that this is our prime duty, and apart from that, other things will be managed by the somebody else on our behalf. It happens many times. So I'll tell you where exactly your role comes in this bigger problem and bigger responsibility, and who is the creator and who probably will be the problem solver. So with that, I will be moving ahead into this topic.
And as I say, I come from a organization called National Physical Laboratory. So it's a constituent laboratory of CSIR, and it has a, I mean, main mandate to maintain the national standards, I would rather say, and then doing the research in the area of the different materials and their relation with the quality measurements infrastructure within the system. So if I talk about the national standards, you know that there are 7 basic SI units, and all those units primary standards is being managed by the NPL itself. So by that way, NPL is the National Metrology Institute, that is called NMI. It is just kind of information that is for those people who may or may not be actually aware of these things. So when NPL maintains these things, so what happens? The entire system of the country is actually dependent upon the NPL if they want to have the traceable, accurate, and precise measurements, which are very much important for anything. If I give you an example, suppose you want to measure certain quantity of weight. So what will happen if you go to the sabji wala or vegetable vendor or anywhere, you talk about okay, few grams का error is okay, that is okay. But if you go to the jeweler shop, आपको अगर ग्राम का एरर हो गया तो बस सारा काम खराब हो गया, तो आप वहां इतने अलर्ट हो जाते हो, बैलेंस के पास तक भी जाते हो, देखते हो ऊपर से नीचे तक, तब मिलीग्राम तक की एक्यूरेसी वी टॉक अबाउट. And many times when the pharma drugs and other things are considered, microgram, even the nanograms quantities are very much important. So that's where the importance of Metrology Institute like NPL comes, who not only provide the accurate and precise measurements, but decide the uncertainty associated with them, how accurately and precisely those measurements, and what is the least count of those measurements, or up to how many decimal places, or up to how much accuracy, or up to the how minimum quantity I can measure with the accuracy and precision. So if you see the case of the typical Chandrayaan 1, 2, or 3, or any rocket launching operation in the India, so you always see that in the top left right side there is a time that is being coming. You see that several decimal places are visible on the screen. So this is not a, I mean, simple thing. There are number of digits associated. That means we work up to the several parts of the second also. We are not only talking about the second. इंडिया में और and if anywhere if you go, आप किसी से पूछेंगे तो बस 2 मिनट 5 मिनट अभी आ गया हो गया, लेकिन वो पता नहीं क्या वो जो है चीजें हो नहीं पाती हैं उस टाइम फ्रेम में, या हो भी जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ पाता, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली पड़ता है लेकिन शायद इतना ज्यादा कुछ हो नहीं पाता. बट व्हेन कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस जस्ट लाइक रॉकेट लॉन्चिंग और रोबोटिक सर्जरी और एनीथिंग, a complex maneuver is considered, millisecond, microseconds, and most actually the realistic case is the rocket launch where the nanosecond accuracy is required. So NPL provide accuracy up to the several nanoseconds, and NPL's accuracy is the one of the best in the world. That is the important. So why this kind of accuracies and why this type of time limits are required? अभी तो हम 1 मिनट की बात कर रहे थे, 1 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, 3 मिनट में आया, because as the universal distances or many other things are considered, or waves, if motion of the wave is considered, so distances are of the several millions of kilometers. Okay, and then the when you are launching a rocket or you want it to land up somewhere, so what is happening, the entire system is highly dynamic. Earth is rotating about its own axis, it is revolving around the sun, moon is revolving around its own axis, rotating about its own axis, revolving around the earth. So you when you say that Chandrayaan will launch on the moon south pole at 6:04 p.m. So exactly 6:04 p.m. Can you imagine what accurate level of prediction is required? So that's where the role of metrology comes, and that's where the importance of nanosecond comes, because distance, very high distances, and very high time accuracy ultimately lead to the prediction of the speeds, etc., directions, etc., that are required. So this is a small complicated, I mean, example I am giving. If you are going to the road, you can always take the U-turn.
You can always किसी को बोल सकते हो कि भाई मेरा व्हीकल बंद हो गया, पेट्रोल पंप दूर है, धक्का लगा दो थोड़ा सा या पेट्रोल. In space, no such possibility exists. Even, I mean, going further, you have already seen what exactly Elon Musk has done. I mean, recently when he has got back the retractable rocket booster back to the Earth, and it has been, I mean, immediately picked up by the chopstick kind of system. And you see that a almost 70-story building like rocket booster coming back and precisely, I mean, taken back and clamped back by the that you can say that chopstick type of tower. So that's where the precision accuracy is considered, and NPL is also doing that thing. So this is one simplest example, because I don't want to go into my topic without, I mean, highlighting the importance of my institute. So I hope whatsoever I am saying is clear to you, or am I audible? I just want to check once again. Am I audible to everyone? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay. And my slides are also visible. So let us move to the next slide. I mean, you know what has happened earlier. The metrology used to be measured in terms of the certain artifacts or certain objects. We say that we have a copy number 57 of the weight prototype, international weight prototype, that is being kept at the NPL under the standard protected conditions. So what will happen? You always take this weight using certain balance, and then calibrate anything against this. So what will happen, because the original kilogram prototype number 57 is present at the NPL, any physical shape is always tends to develop certain changes in either its weight or its dimensions or anything. For example, the scale, it tends to shrink or maybe increase in length as the environmental condition changes. Similarly, weight, there might be corrosion, there might be oxidation, there might be deterioration also. So the things may not be as constant and we are expecting. So it has been decided that okay, everything has to be redefined in terms of the universal constant somehow, through new sets of equations. So kilogram has now been redefined in terms of the Planck's constant, which is, you already know that it's a constant. Similarly, mass in terms of the speed of light. How it has been achieved? It is by using different kinds of system. For example, for the weight, there is a device called Kibble balance that is work on the electromagnetic force to balance the weight that is to be measured, counterbalance the weight, and accordingly through those signals we can measure the weight accurately and precisely. So by this way we become independent of the condition that tends to change the a reference material that is being used to calibrate or standardize the things. So this requires huge lot of R&D, and that's what exactly NPL is doing. So NPL has a very strong metrology group, and they work very hard towards whatsoever we people are realizing as a material scientist, because ultimately measurement is the base of everything. Whenever we measure something, sometimes or other the accuracy and precision comes into the picture. Not only us, our entire Indian industry and maybe the foreign industry many times, and many businesses, many cases also, I mean, being dependent upon the NPL or its constituents or related, you can say that the bodies or clients which takes the calibration or maybe the traceability from the NPL. And then the role of the legal metrology department sometimes comes when the dispute arises. So if the measurement or standards or accuracy is not there, even they cannot do anything. So that's how the entire system goes. So anyways, now I'm just showing you one of the slides. It says that what meteorological day 2024 celebrated on 23rd March. You see that the theme at the front line of the climate action. So when I say the meteorological day rather, I would say, so meteorology is the science of the weather. So again, environment and weather comes into the picture. You just see, and then I will talk in which context I'm talking about. Let us come to the next slide. World Meteorology Day, again celebrated. It was celebrated, and this year the theme was that we measure today for a sustainable tomorrow. So measurement and then sustainability we are talking about. So
again, sustainability is related to somehow the environment. United Nations World Environment Day, 5th of June. Again, the theme was our land, our future, and the biggest, I mean, you can say that umbrella under which it has been organized was so ecosystem restoration. They talks about that we should able to manage our deserts, halt desertification, and build drought resilience kind of systems in our ecosystem. So they talk about there is a they say that generation restoration. So this is a small video. Again, I mean there is some issue, so it won't be played here on this platform. But what it shows that a kid is going with a plant. So it says that what exactly we people are doing. We have a nature and the Mother Earth as a big reservoir. Nature has plenty of the things. It never disappoints us. It gives us so many resources. It takes care of each and every other person. So what exactly is happening over the period of time? We become so much demanding that okay, we are drawing out many things from the nature, but we are not allowing it to, I mean, develop or replete itself. Because ultimately, when we draw something, it is also not the infinite source. It forms those things by certain phenomena, and not only that, there are certain phenomena through which nature is achieving those things. We are disturbing those phenomena also. So it says that we should have enough for our future generation. So that will only possible when we behave responsibly. So a child is going, he's taking some plants and planting somewhere, and he's taking the place that we will be doing it in a responsible manner, so that there should be balance between what we are doing with the nature. And one of them is that we are not going to pollute the things. And as I talk about the uh, this world in United Nations World Environment this theme, it talks about the desertification. So it says that we should prevent the formation of the deserts, but it never says that the existing deserts may be destroyed. So we should not be confused, because desert plays very important role in our ecosystem. Whenever we have the desert, there are millions of species, they live over there, and they plays and their important role in the management and balancing of the ecosystem, and ultimately the environment, weather, that is the local condition, and a global climate, that is a climate which is the global phenomena. So we should do that kind of action that should not allow the deserts to be converted into something else, and we should protect our deserts. So why I'm talking about, I just want to give you a caution also. Many times we look our those spaces, whether it's a desert or sea or any other thing, as a open barren land or free space where we can do anything. Yes, we can utilize those spaces judicially, but we should not do it in a way so that it adversely affect the species lying over there and then the nature. I just give you a very small example. We have a very big land in our country, desert land, and or over that run of Kutch, we are, I mean, definitely, I mean, planning, and already work has been started to install the solar panels. You install the solar panels, there is no harm, but please follow the principles of the, you can say that, agrivoltaics, so that it should not adversely affect the ecosystem that is lying here, because they are more, I mean, friendly towards the very high, you can say that the dry conditions, and then very high sunlight irradiations and high temperatures. So if any shadow will be casted over those regions, so there might be problems. So we should do it in such a manner that it would be win-win situation, and no species is being adversely affected by it. So that's what I wanted to convey. So let us move forward. Another very important thing, we all talk about the Swachh Bharat Abhiyan. We already launched with a very जोर शोर, और आप झाड़ू देख सकते हो, आप चश्मा देख सकते हो, हमने सब चीजें यूटिलाइज तो कर ली यहाँ पे, बट हम कहाँ इस टाइम यहाँ पे, what exactly is our standing nationally or internationally, that we need to introspect and retrospect, and accordingly we need to change our actions. So we have to be very much, I mean, conscious about these things. So I'll show you many things related to them. I'll take a pause for a minute
So just give me a minute. I I just want to, I mean, just pause just for a minute. So I'll be on the mute mode. Atulji, what happened? Hello, am I audible? Now you're audible. Earlier, Yes. in between, I'm there so it was. sorry. I'll tell you what exactly has happened. Okay. There was a, No, please continue. Please continue. Thank you. so we need to see what exactly is happening and where we are standing. Can you see my slides changing? Hello, can you see my slide? Yes, sir. We can see your slides. Okay. So I think those who have not previously seen these slides, you can see there are several pictures which are showing different objects. I mean, it is related to the landfill site. You can see that there are certain birds, there are certain people doing something, there are cattle apart from the site of the waste, and then there is a landfill fire. So why this thing, such kind of things are happening? We already see that there is a data is very large in terms of the quantity of the waste generated throughout the world and in the India also. But what exactly this thing is happening and why I'm showing these pictures? So these fellows are there because birds see certain kind of foods or animals see certain kind of food. These fellows see certain kind of resource, maybe the plastic lying over there. And landfill fire happens because we mix those kinds of material which act as a food material for them, transport them over to the landfill site. And what was exactly is happening, because we many times have the polymer or plastic material, they cut the short the supply of the oxygen. So anaerobic condition sets in, and what will happen, instead of the oxidation of the material, the anaerobic conditions, the improper oxidation takes place. And what will happen, instead of the composting, the things that tends to compost start rotting, and that will lead to the landfill fires because of the production of the methane. And methane is again a greenhouse gas, and then burning leads to the pollution. So we are unnecessarily complicating the things. We are not taking lessons from these pictures. We always discuss these things, but I always see that still we litter. We do not realize that it is our own responsibility. We always say that, okay,
we cannot do anything, we are helpless, हमें क्या करना है क्या नहीं करना. तो at the end of the presentation I'll show you some of the features that are linked to the individual's societal and environmental responsibility. So it is not the role of the government can give you advisory, they can form the rules, but it is us we need to who need to check our actions, and then only things will evolve. So if I talk about the simple case of the plastic waste, if you see, there is a huge quantity of municipal plastic solid waste is generated. It is about 2 lakh metric tons per day in our country. But what will happen? The plastic waste is very small fraction of this. If you see, several 15,000 metric tons per day, and only 8% of that is the one that is being generally, if you consider this is the 8%, and 8% most about of this is being recycled by the recyclers. They take away any kind of plastic material, dirty भी है उसको भी ले जाते हैं, wash कर देते हैं. So only very small fractions remained, which many times cannot be packed, cannot be processed because of the many issues. Where it goes, it won't go wastage, it goes in a legal manner to the sites. They recover energy from these kind of things also. So still you see, it represent ultimately only the 3%. So if you see the 3%, you realize that 3% is nothing. So we feel relaxed. But have you ever thought about this 3% is by weight? If you talk about by volume, so volume of the plastic is light waste, so volume is very light, so it will litter everywhere. This 3% is the biggest problem for the us. It litter everywhere. You go to the water bodies, you go to the mountains, you go to the sea, you go to the cities, you go to the many important beaches. I mean, what exactly is going on? And then there are few people who carrying on the cleaning tasks, but it is never going to be resolved until and unless individuals start taking their responsibility. So we have to be very much clear what exactly we are doing. This is the case of the plastic waste. There are other waste also which are more complicated. So we always I mean, first of all we litter, and then we try to shift our blame toward these materials. Plastic is toxic, plastics create this much problem. But I would rather ask, where exactly is the toxicity associated with the plastic? Plastic is not toxic. If you put your food waste inside the plastic packaging and then throw blades and any sharp objects along with that, and kettles and other people, they consume that food, definitely they are going to die. And what will happen at the end? We will say that the waste is the main culprit, and these kettles and other people are, or other or any organisms are nuisance. So again we are blaming for them, because these are the organisms who are actually birds, these stray cattle, stray animals. They are actually not doing anything, they are cleaning those things by consuming certain amount of the material that is being littered. So again, the culprit is not them. The culprit are the people who made them to roam over the road. They just free their kettles and they expect that they will come in the evening and they will deliver the milk to them. Similarly, is the case with the plastic. Plastic has been made to act like a barrier to the moisture, and that's why it's a very good packaging material. And beside being it's a electrical insulator, it is a very good material that is impervious to moisture and oxygen, and it is a low density material, and it has a very good strength also. It is a flexible material. So when you throw it to the landfill, exactly the same duty it is being done by the plastic material. So where exactly is the problem? Let me tell you by giving a simple example, without I mean moving more about the things. We always have a knife at our home. When we use it is inside the kitchen, it is a tool. But when we use it with aggression, or when it handed up into a culprit or any kind of criminal, what will happen? It will become a weapon. So similar is the case with the plastic. I mean, it is we who are regulating this kind of tool, this material, and then we are saying, wrongly blaming the material. So please start realizing that it is us who are responsible for these things, and it is we only who will going to change the scenario. Yes, there are possibilities where these materials can be confined and they can be managed in a way that I'll be discussing. But first of all, we should realize what exactly is the problem. So
why we are very much concerned about the plastics and other things. See, when we talk about the littering and other things, sorry to say, nobody is that much bothered about. Some sensitization has taken place when we realize that the global warming is happening because of the increased amount of the carbon dioxide or greenhouse gases emission, and because of that the global average temperature of the earth is rising. And because of that, what exactly is happening, there is a possibility that glacier may melt and the many cities of the country may submerge. And because of the increase in the temperature of the earth, many of the species may also be eradicated, or they may also become the endangered, or they may be extinct also. So, and many times many biological changes may take place which affect our entire ecosystem. So that is the only simple reason we are concerned about it. And then we realize that it is not only the global warming, it is the increasing pollution level that is affecting our health. So we start, I mean, looking into the things, and we start making the fanciful presentations, like I am also doing a certain kind of fanciful presentation, but with a purpose, with a with a way to tell what we can do. So if you see, look at this thing, our emissions are going the way we are doing it at India. We are increasing our emission at least by minimum by 10%, instead of checking the emissions to so as to meet the net zero emissions. Net zero means we say that how much carbon dioxide or equivalent gases are emitted within the system. Same amount should be fixed by our actions, either by using the renewable energy resources, or by any other actions, or by planting the trees who can fix the things, or many other phenomena. By, I mean, if you see, the circle shows that either using the, you can say that the public transport, reducing our energy consumptions, using the greener technology, etc. But what exactly is required, if we want to do that thing, we need to decrease our emissions at least by 45%. So if you see, a net change of 55% minimum. So 55% of net change suddenly is just like a sharp turn. And when there is a sharp U-turn or any other things, there is bound to have the accidents. So what we can do, at least, this is a strategy for the country. If we divide that sharp turn into certain small kind of turns, a small kind of individual actions, I think this sharp turn can be subdivided into small kinds of turns. Okay, when you driving the vehicle at a very high speed and you suddenly apply the brake, accident is bound to happen. But there are possibility, if you have the good reflexes, you can just divide that brakes into certain small fragments. There will be small jerks, but the bigger jerk can be avoided, or bigger accident can be avoided. That is the message. So anyways, let us move further. Let us come to the most important thing, sustainability, that everybody is talking about these days. What sustainability is, we need to understand. First of all, sustainability simply says, it talks about the entire balance within the ecosystem, so that the resources that earth has given to us will be judiciously utilized with a minimum wastage, so that our earth remained habitable and maintained the good atmosphere and good condition that has given to us as a human being, because of which we thrived and we have come up to the level where we are making the growth which has never been achieved by any other species. So while reaching to that stage, the balance has to be such that we should have enough for our future generations. I'll just take you back into the past. हम लोग छोटे छोटे थे, मैं थोड़ा सा हिंदी बीच में मिक्स करता हूँ. If anybody has the problem, please write in the comments. When we were on the childhood days, what will happen, we were just like a kids. We used to have the limited resources, but still we were very healthy and happy, because the pollution levels was very less. And when I talk about the pollutions, all kinds of pollution, I'm not talking about the plastic pollutions and ABC kind of pollutions. It is the particulate matter related pollution. It is the noise pollution also, or sound pollution also, and light pollution also. We have so much lights. Whenever the festival comes, we started, I mean, putting lights and crackers and any other things we use
and rather we misuse them in such a way that we create a very disturbing kind of situation. So what I wanted to say that in our childhood days we used to see the sky and we used to see the clear blue skies. अभी तो देखने को मिलता नहीं है. We used to see the stars at the night and many times the star clusters, various kinds of constellations also. अभी आप चले जाओ आपको कुछ स्टार्स लिमिटेड ही दिखेंगे नाइट में. सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली हमने तो कहावत ही फेल कर दी बिल्कुल. सो व्हाट विल हैपन, आप रात को जाते हो आपको स्टार्स दिखते नहीं है. many cases में क्या होता है कि if we are observing we may be seeing this we may be seeing some bright planets if it is the appropriate period of time, whether early morning or in the evening. Venus दिखता है, थोड़ा जुपिटर दिखता है, ब्राइट दिखते हैं और हमें पता नहीं होता आजकल हम उसको भी स्टार बता देते हैं. स्टार्स तो बहुत कम ही दिखते हैं, एक दो कुछ ही स्टार्स हैं. आई डोंट वांट टू शो माय एस्ट्रोनॉमी नॉलेज बट आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग. क्यों नहीं दिखता हमें सिटीज से, क्यों हम बोलते हैं डार्क लोकेशन पे जाएं, लद्दाख पे जाएं. It is only because of the reason that not only the air is polluted, so there is a lot of dust and there is a lot of light also. And what will happen, those suspended light dust particles scatter the light. Everybody knows that scattering of the light. So ultimately a hazy condition is created that creates a shield that prevent the light from the stars and everything is coming to us. So clouds, dust, light, everything is complicating the situation. So we need to think in a systematic manner. तो हम अपने वो चाइल्डहुड वाले डेज अगर अपने बच्चों को और अपनी जनरेशन को वापस लौटाना चाहते हैं, उनकी हेल्थ लौटाना चाहते हैं, so we need to follow the principles of the sustainability. That means we should utilize our resources in such a way so that we have enough for our coming generations. We should not deplete in a way. तभी तो हो पाएगा ना, नहीं तो आप बैंक अकाउंट में how much money you can deposit in their bank accounts, how much FD you can do, how much education you can give them, but they are breathing the same air. कहाँ पे किन अपनी जनरेशन्स को हम लोग अब्रॉड कंट्रीज में भेज सकते हैं जहाँ पे कि AQI 50 से बिलो है. So there is no possibility. Why can't we do our efforts so that we can make our country below 50 AQI? And I am again telling you, this is not a hypothetical case. If we all people who will be considered as the biggest population in the world start thinking about it, and even if the intellectual like us start taking the responsibility and start understanding where our role falls. See, there are 17 goals given. If you talk about no poverty, zero hunger, health, education, gender equality, everything is being mentioned here. If you see, every one of us fit somewhere, every one of can contribute. See, when we talk about the poverty, it is due to the certain conditions, but if we contribute in our way, either by educating certain people, either by providing them certain kind of skills so that they are able to earn, either provide them good kind of health and directions and many other possibilities. So it's a very big grid, so we are able to resolve many other kinds of problems also. So until and unless we talk about all these things, we can say that our research is sustainable, our whatsoever R&D we are carrying out is there is sustainable, but entire system will become sustainable only when we follow all these principles and their elements are there. So let us move back to the next slide. We talk about the pollutions and we can say that, okay, can we afford the plastic? No, we cannot afford this, ban the plastic. But as I already said, banning the plastic is not solution. Then what exactly is the solution? Solution is we should behave responsibly. And how responsibly? We can reduce our consumption. Reduction is the first best thing. अगर हमें उतना नहीं चाहिए तो हम मैनेज कर सकते हैं. Why can't we manage the same plastic bags? At my home, if I have the carry bag, I use it multiple number of times, and if required with a limited quantity of the water, sometimes in some cases I can wash it also. There we have the enough sunlight, it will dry also. In most of the cases it won't develop the pathogens and bacteria just like the fabrics. हम थैले की बात करते हैं बट हम भूल जाते हैं कि थैले में भी हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़े दिन में उसको वॉश करना पड़ता है, वाटर चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट एवरी मटेरियल्स का सेम आ जाता है. तो हम कभी भी कोई भी सॉल्यूशन, कोई बैम्बू बताता है, कोई कुछ और बताता है, सॉरी टू से
all solutions are almost equivalent. If you see, the plastic will fit much better compared to them. So thing is that if we want to prevent our resources, क्योंकि ये petrochemical से आता है, we should use them in a judicious manner. So first principle say reduce, then reuse. रीयूज आप कैसे कर सकते हो? इसी प्लास्टिक बैग को बार बार रीयूज करो, या कोई भी मटेरियल बार बार रीयूज करो. आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. आई हैव द टी शर्ट, ब्यूटीफुल टी शर्ट विद मी. आई रियलाइज दैट इट इज स्टिल गुड एनफ फॉर मी, इट इज कंफर्टेबल. माय फैमिली सेज दैट आप बाहर जाते हो, अच्छा नहीं लगता, हमारी भी कोई रेपुटेशन है, आप चेंज कर दो इसको, अच्छा नहीं लग रहा है. माय फादर सेज समटाइम्स, ओके आई विल चेंज इट. बट आई से दैट आप इसको थोड़ा सा यूज करके देख लो घर पे, इसे डस्टर क्लॉथ बना रहे हो. दे ऑल्सो एग्री टू मी, दे मेक इट डस्टर क्लॉथ. कुछ टाइम बाद कहते हैं ये भी गंदा हो गया. देन आई से ओके यूज इट एज ए मॉप. वो मॉप की तरह यूज करते हैं. आफ्टरवर्ड व्हाट विल हैपन, जब बिल्कुल खराब हो जाता है तो देयर आर सर्टेन शॉप्स, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर वर्किंग ऑन द टेक्सटाइल रिसाइकलिंग. So it still goes to them. Okay, those facilities are decreasing compared to our childhood days because of change in the way we see the things, but they are there, they can give you very beautiful article out of this. So please follow similar kind of principles in your daily life, things will improve. And when I say that I talk about the solutions, so then afterwards when we have done everything with the materials, we either reuse it by the using it for certain other applications, or we are using it by repairing or refurbishment. If it's a electronic good, then we can talk about the recycling of the material, or maybe the energy recovery from the material. So that way we can solve a part of the problem. So if you see the UN's theme on the environmental day, quite 2 3 years back, the theme was beat the plastic pollution. But they never say the stop the plastic or beat the plastic. They said beat the plastic pollution. The keyword was that. So please understand, banning plastic is not problem. Plastic is not toxic. And these days everybody talks about the microplastics. So I always say better we first of all understand what exactly is the microplastic, because definition itself covers a very broad range of plastic materials. So first of all correct our definition also, whether see whether every plastic can be called microplastic, or we need to further subcategorize it. And then we need to understand how microplastic can be accurately and precisely measured, what are its side effects, and then only we create hue and cry situation. Otherwise what exactly is happening, everybody is talking about, जैसे कोई नया टॉपिक आता है, we shift to the topic and we start creating the things, and that confuse the public. So we have a bigger responsibility. Facebook पे, YouTube पे articles आ रहे हैं, and I am sorry to say that sometimes you may be getting very I mean important popularity also, but if yourself do not done the homework very in a precise and accurate manner, and you are propagating the information, so you may be creating the problem also. So I always I mean request everybody, there are many more seniors involved over here, they know about what exactly I want to convey, so they will better I mean understand my concerns. So please behave responsibly towards whatsoever you are doing, because people may follow you as an ideal, they believe you, trust you. If we propagate anything that is not right at the moment, and we not correct understanding is there, so there might be problem that solution say pollution, solution may itself create many time pollution. So first of all we should understand the entire problem, and then we give the solutions. And based on that, many times I say there are wording, I think it is in Hindi. If you understand that it is a good, I'll I mean read it out for you, and maybe they sing it out for you. That जब जब सबके पास सॉल्यूशन है तो क्यों इतना पॉल्यूशन है, जब सबके पास सॉल्यूशन है तो क्यों इतना सॉल्यूशन है, आंसर इतने भरे पड़े पर मिसिंग तो रियल क्वेश्चन है, कुछ पॉल्यूशन के सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन से पॉल्यूशन, बड़ा गड़बड़ है सब मामला और उलझे हुए इल्यूशंस है. तो दैट सम सब व्हाट आई वाज सेइंग, दैट everything is being messy. So first of all understand the things, and then start providing the solutions, and that will happen when each and everybody start participating, playing their roles. And that will come towards the end of my presentation कि इंडिविजुअल का रोल कहाँ पे आता है और कैसे आता है. So as I said that the solution is first of all reduce, reuse and recycle. Follow this kind of strategy that will resolve much part of the problem, and by that way we could reduce the
burden on the already depleting the environmental resources. And if we do that, so we can meet the part of the sustainability principle that we should consume our resources in a judicial manner, so we have enough for our future generations. So best way is that whenever you have any kind of waste, we should segregate it at source itself. अगर वो source पे segregate नहीं हुआ, mix waste बन गया, तो क्या हुआ? If the plastic is become dirty with the organic waste, so what will happen? I need to wash the plastic. I need to use certain kind of maybe chemical also to clean it. So उसके लिए बहुत सारी एनर्जी जाती है, रिसोर्सेज जाते हैं, मैन पावर जाती है, मनी जाता है, और अगेन सेकेंडरी पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है. तो अगर हम पहले ही सेग्रीगेट कर लेंगे, दैट वुड बी गुड प्रैक्टिस. सिमिलरली अगर ऑर्गेनिक वेस्ट मिक्स नहीं होगा, तो इट कैन इजिली बी कंपोस्टेड. आई विल शो यू हाउ वी मैनेज एट आवर होम इटसेल्फ. आराम से कंपोस्ट हो जाएगा. इंडिविजुअल लेवल पे आप उसको कंपोस्ट कर सकते हो, रेदर देन के वो जब तक ट्रांसपोर्ट होके जाता है वो पार्शली रॉट हो चुका होता है, मीथेन प्रोड्यूस कर चुका होता है. तो हम ऐसा काम ही ना करें. तो that way we can manage the things either at the individual level or the community level or at the slightly bigger level. अगर हम अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, सो वी नीड टू बी केयरफुल. ऐसा ना हो कि आपने अपने घर पे तो कर लिया, बट व्हेन द स्वीपर कम्स ही मिक्सेस ऑल द वेस्ट, और इवन द कम्युनिटी लेवल एमसीडी कम्स एंड दे मिक्सेस ऑल द वेस्ट, तो सारा एफर्ट जीरो हो जाता है. तो वी हैव टू behave in a such a manner so we form a very good understanding and bigger ecosystem where the things will be managed in a proper way, so that the things propagate in the right direction and there are no lapses at any stage. So what exactly is the waste to wealth and circular economy strategy says that अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? We take the material, we make something and then we bothered about how to dispose it of. और जब हमें समझ में नहीं आता, तो हमें समझ में आता है कि चुपचाप चले जाओ, सड़क पे फेंक दो. नोबडी इज लिसनिंग, नोबडी इज वॉचिंग, नोबडी इज सीइंग. कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कौन सा प्राइस हमारे ऊपर पेनल्टी आने वाली. सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, देयर वाज ए फेस्टिवल ऑफ द दिवाली. सॉरी, if I talk about the Diwali, please, it is my humble request, Diwali or any other festival, please do not link my presentation or anything with any religion or any other thing, and please do not, I mean, make any kind of comment that will spoil the very much purpose of this presentation. So लोगों ने सबने घर पे सफाई करी है, and when I move out, कहीं पे वॉश बेसिन पड़ा हुआ है, कहीं पे सिंक पड़ा हुआ है सड़क पे, कहीं पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है. So what exactly we are doing? We are, I mean, we are definitely cleaning our homes, but who gave us the permission to spoil our ambience and environment outside it? Who will take the responsibility for that thing? I am telling you, no religion, no teaching, no dharma says that we should carry out our actions in such a manner or celebration in such a manner that it harms the mother nature. I am telling you, nature is the ultimate form of the god, and taking care of the nature or environment or its creation is the highest form of adoration, or it's a higher form of devotion. So that's what I always say. So please act responsibly. I am saying it to you, all of you, with the due regards and folded hand. Okay, and what will happen if we start taking care of those materials? So instead of pollution, what will happen? I always talk about reuse the material. अगर आप उसको reuse कर सकते हो, repurpose कर सकते हो किसी और applications के लिए, कोशिश कीजिए. और अगर ये सिस्टम कैसे हो पाएगा? If every one of us comes at the same level, start develop the similar thinking, have the behavioral changes. मैं को अगर अपने नेबरहुड से या आस पड़ोस से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, अगर मेरा एक्शन राइट है तो ठीक हो जाएगा. हम लोग ये सोचना छोड़ दें वो चार लोग क्या सोचते हैं, जिसको कि किसी ने देखा नहीं है. अगर हमारे एक्शन राइट है, रॉन्ग सेंस में हमें जरूर सोचना चाहिए कुछ भी रॉन्ग करने से पहले, बट राइट में अगर हमारे एक्शन ठीक है, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दोज थिंग्स. अगर मैं किसी चीज को रीयूज करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं सेकंड मैं आई ऑल्सो पर्सनली मेनी टाइम्स गो टू द मार्केट एंड परचेज द सेकंड हैंड क्लोथ्स. आई गो समवेयर, पीपल लाइक इट ए लॉट कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, कहाँ से लिया है, किस ब्रांड का है, क्या है. देन आई सेड मैंने तो 150 रुपए में लिया है यहाँ से, और मैंने ये फलाना फलाना मार्केट से लिया. अच्छा, ऐसा भी होता है. सो बाय दैट वे वी कैन प्रमोट दोज फेलोज ऑल्सो हु आर सेलिंग द वेरी गुड थिंग्स. और मैं आपको, आई एम सॉरी, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी negative kind of situation. Many times you will find the same clothes that are lying over there, they have been taken in a bulk by the some big manufacturer. They place the tag
और वो दुकान पे आप 2 3 4 5 हज़ार का ब्रांड के लिए ले आते हो, जब उसे एक बार धुलाई करते हो आपको पता चल जाता है, फिर आप जाते रहो। आज की डेट में एवरी ब्रांड नो दैट nobody will come back until and unless he is a middle class very conscious person who has enough of the time. Nobody goes back to the return the clothes. उसको फेंक देते हैं, इधर उधर दे देते हैं. So please act responsibility, be smart and intelligent, and well, while becoming smart and intelligent and talking about the artificial intelligence and smartness or anything, we should not lose our common sense. That's what I wanted to say. So we follow, if we follow this circle of making something, reusing it, using it, reusing it, remaking something out of it, and then thinking about the recycle, and then try to use it as a resource to make either that article itself or something else. So while doing so, if you see this figure where I talk about the refuse and final destination, so between us, the minimum quantity of waste can be generated and minimum energy can be consumed, because if we follow this cycle, the energy and many other things can be economically utilized, because material may not be going to the landfill, so transports and related cost and related emissions are emitted. Many times the labors can be avoided, and many times the resource that we are purchasing and its transportation cost can be avoided. So we should follow this thing, and once we start following this thing, it will create value out of those waste money. So waste become resource, not the waste. So that way, when something becomes a resource, it has the monetary value, so you can generate monetary circular economy around it also, and altogether the business out of it. Already our recyclers are doing that thing since ages. इंडिया में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है. ओनली इशू इज दैट दैट थिंग इज बीइंग मैनेज्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर हु इज टेकिंग responsibility for our actions. The only issue is that although they are doing it, they are making the money, they are not taking care of the environment. Either they are not, well equipped to take care of those things, and they are not having the proper knowledge about also. If you provide them the solutions as a scientist, which are cost effective, and you just aware them about the things, ट्रस्ट मी दे ऑल्सो वॉन्ट नॉट टू पोल्यूट द इन्वायरमेंट. वो भी सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पानी सीवर में छोड़ना है. उनको अगर कम पानी वाला प्रोसेस मिल जाएगा, लेस वाटर वाला प्रोसेस मिल जाएगा, या कोई चीज हम रिसाइकल कर सकते हैं, वो भी यही काम करना चाहते हैं. आप सड़क पे, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, सड़क पे मेनी टाइम्स वी गो टू द रोड साइड, वी हैव द शुगर केन जूस मेकर. आपने देखा है वो कितनी बार उसको, गन्ने को बार बार मशीन में डाल देता है, वो उसमें से एक एक चीज निकाल लेता है, क्योंकि इकोनॉमी एसोसिएटेड है और उसे प्रोसेस पता है. अगर आप मटेरियल के सेंस में भी ऐसा कर दोगे, तो थिंग्स विल बिकम मोर बेटर. और उसके बाद भी वो गन्ना कहीं नहीं जाता है, उससे आजकल बगास की प्लेट बन रही है, वो फ्यूल की तरह यूज होता है. वो बात अलग है कि फ्यूल के टाइम पे थोड़ा पोल्यूशन हो जाता है, तो हम उसके बगास की प्लेट बना लेते हैं कुछ और. And we can do anything else also. We can make biopolymers also. There are n number of possibilities. If we can do that thing in a responsible manner, technically sound manner, following the principles of sustainability, things will improve. So that's what my main message is. So anyways, let us move forward. I'll just want to show a few quick examples what we do. At our institute, we always have a huge amount of tea. Tea always comes as a waste. Out of canteen, every people have the tea, and then that was going as a mixed waste. वो सारे वेस्ट के साथ जा रहा था, तो हमने सोचा कि हम इसको at the childhood time we used to use it as a compost, so why not try to do some science with it, because ultimately it's a carbon source. So we have taken the tea bags, removed tea out of it, cleaned it, heat it at certain temperature, and then we carry out some functionalization also. We could able to make the supercapacitor device. You can see that how beautiful it was working. The device of the 3 cells of the potential 3 point of 3 point something volt was able to sufficient enough to lit the LED, and it was glowing for certain period of time. And when we see the charge discharge configuration, it was giving the perfect triangular curve. So that means a perfect EDLC behavior was coming. So we have shown that it can be used for the high-end applications. For example, the supercapacitor development, it could be one of the material. And we have developed the other applications around these also, that I'll be showing later. So I talked about the waste. So there are different waste. Everybody talks about the stubble burning and this and that. So we could able to show that, okay, why is our simple paper and experience is the, because these materials are
biopolymers only, and we have the expertise in the polymers, so we can also deal with the biopolymer. We could able to pulp it out. You can see that raw pulp and very clean bleach pulp also. So we could develop these kinds of stuffs also. And if we can extract silica out of it, silica has a very huge market. So we can easily manage those things. And there are various numbers of players that are present within the country who are providing the different solutions also. So these are the solutions that have been developed by us is a small scale solution. I mean, we have developed keeping in mind that even an individual can manage it within its premises using the simple solutions. The only issue is that why this double burning happens is that our logistic and collection system is still not, I mean, very much efficient. Even if that is efficient, they are not getting the enough payback money for this period. And if the operation is not fast, especially during the winter season, this season when the crops changes, so they get only duration of 10 to 15 days between the two crops. So if we provide certain kind of solution that is economically viable and they are getting good amount of money and their soils are not getting depleted, so definitely they will support you and they are going to build the systems around it. So that is the moral of the story. That is one such solution. So let us move back to my next slide. Again, I am just coming to my next slide. I was talking about the problem that are related to the energy and environment, and corrosion is one such very big problem. So what happens at our institute, we used to work on the corrosion protective coatings, and if you protect the corrosion, you provide the coatings which can protect the corrosion even if there is a scratch over the surface. So there is a almost, you guarantee that the substance or material is not going to corrode it even if there is a scratch or there is a peeling of the material at certain points. So the life become virtually infinite. So it has a huge implication in terms of the societal usage, and we already transferred this technology. So what will happen if we have this kind of systems and solutions available? So we can always improvise upon these systems. What we have done, we have already demonstrated the use of the tea bags, teas. So what will happen to the tea bags? Tea bag has a very good amount of cellulose. So now we have extracted cell nanocrystals present within the cellulose by using our laboratory technique. And once we incorporated those nanocrystals within the system, so what will happen? We have found that the corrosion inhibition efficiency of coating becomes even much more better compared to the coatings we have developed. So now we are developing the novel coating compositions using these materials and other, and we have demonstrated their use, and now one industry has already approached us. So now coming back to the again to the problem of the solid waste management, आप ये पिक्चर्स अक्सर देखते होंगे कि हमारी नदियों की, हमारे बाकी सिचुएशंस की क्या हालत है। हम लोग वेस्ट को जगह जगह पे डाल देते हैं। तो क्या हम इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, हम ये वेस्ट यहाँ डालें नहीं और जो वेस्ट है उसको रिस्पॉन्सिबली देखें और फिर हम उसको एज ए रिसोर्स यूज करें, और हम क्या दो प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? तो आई विल गिव यू एन अदर एग्जांपल. There are societal issues that absence of bathrooms and toilets. The people are forced to live in the open. Females goes to the open defecations and they face the hygiene problem as well as the crime against the women are increased because of that thing only. Can we provide the problem solutions? Yes, molding has already been there. मोल्डिंग हमारे सिस्टम में बहुत पहले से होती है, पास्ट 50 साल से, जब से प्लास्टिक बना है, 30 40 50 साल से मोल्डर्स ऑलरेडी हैं, वो मोल्डिंग करते हैं इसको डिफरेंट शेप्स में, एप्लीकेशंस में. रोड मेकिंग सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी बीइंग देयर. Already there are dedicated institute called Central Road Research Institute who also happens to collaborate with us on the different aspects where the polymers is being considered. तो और क्या solutions हो सकते हैं? So what we have done initially, we have make a prototype tile element of certain configuration and we demonstrate that even cabin or cubicles are made out of it, and maybe tiles of certain structures made out of it, and it can be utilized as a pavement under certain conditions. So certain conditions are those which we need to understand. But anyways, this is the structure I was talking about, tile structure, and this is the panel that we have prepared, and it can be used to make the structures like toilets on cabins or other kind of. So there are great opportunities but grand challenges associated with it, because plastic is a delicate material. We need to see that this soft material has to compete with the other material in terms of the cost also,
in terms of the properties also, in terms of the flame retardants also. So many issues are there. Keeping all these things in mind, we are working upon, we have demonstrated something. So one such material, that is the paver tile, has been taken by the industry and they utilized it for certain applications. 7 industries has taken it, they utilized it somewhere. I always say that it has to compete with, so there were some question marks, but many times when the industry takes the things, they are more oriented towards immediate return on the investment rather than working about the solutions and where it can be fitted, whether it goes to the paver or some other application. So that's what, where the role of people like us comes. So we are becoming more responsible and we are developing the alternative usage of these materials also, where it can be used. Plastic waste already been utilized as a road improvement material, as a ingredient which can improve the conditions of the road. You can always see that जब भी हमारा सीजन आता है, हमारी बारिश आती है, हमारी रोड की कंडीशन क्या हो जाती है, and we started blaming the authorities. Always authorities are not responsible, sometimes they are responsible, sometimes it is we who uses the roads in a irresponsible manner, because we throw many objects around the roads which falls over the roads and they produce the pit holes and other kind of things. So not always the construction material is responsible. Definitely contractors are many times responsible because of the substandard material, but हम भी responsible है. हम कुछ भी डाल देते हैं, वो हमारे टायर्स के नीचे आ जाता है. हम एक्सेस में व्हीकल्स लेकर चलने लग जाते हैं जहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं. So that creates the problem. टायर के नीचे आएगा, पंच कर देगा, concentrated object बन जाएगा, होल हो जाएगा जल्दी. So load distribution नहीं हो पाता. So we need to understand what exactly is happening. So please understand, the plastic has a very much important material that can be used to resolve many of the problems associated with the conventional payment material, but it has to be used in a judicial manner, and for that institutes are working. So now coming back to the topic, what exactly we are doing. मैंने आपको simplified plastic material बताया, but pharmaceutical blister is another kind of complicated waste that generated in a huge quantity, and after, especially after the you can say that the pandemic like COVID, its volume increases. और जब हमारा pollution increase होता जा रहा है तो साथ में ये solution भी increase होता जा रहा है, health का solution. तो ये इतना ज्यादा अमाउंट में जनरेट होता है और हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं. ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि कुछ लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, वॉशिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और उसके बाद क्या करते हैं, इसे ग्राइंड करते हैं क्रायो ग्राइंडिंग प्रोसेस से. सो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते हैं. क्रायो ग्राइंडिंग इज ए हाई एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस. मटेरियल पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिक भी पाउडर में मिलता है, एल्यूमिनियम भी पाउडर में मिलता है, तो उसके हैंडलिंग हैजार्ड्स होते हैं. पाउडरी मटेरियल डस्ट क्रिएट करता है और एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है. और जो क्रायो ग्राइंडिंग मिल्स हैं, दे आर नॉट सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस, सो दे आर huge investment which our MSMEs cannot afford. So we have developed one such process, is very simple chemical process in which the chemical that is being used can easily be recycled back. Okay, recycled and reused n number of times, and that chemical is itself is a commonly used material, and many times those chemicals have the fuming hazard also. So we have played a very small trick with the system, and what will happen, that material now starting behaving as per our regulation. अब ये fuming hazard भी नहीं करता है और हम इसे reuse कर देते हैं, और ये मटेरियल जो हमारे रिकवर होके आते हैं बिगर फ्रेगमेंट्स में रिकवर होके आते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स और प्लास्टिक जो फ्रेगमेंट जो हमने श्रेड किए हुए हैं rather than the powder. So इसकी commercial value बढ़ जाती है. So that's what we are doing. It's a one of the complicated material. अगर हम next material पे जाएंगे तो second case आता है waste multi-layer plastics. So when we talk about, can I take a break for just a moment? If you allow me, I'll just take the water. So I'll pause for a minute. Hello. Hello. Sir, sir, hello. Dr. Saini, you are not audible now. रौनक जी, आपको नजर
Yes, Hello? sir. उनका Can you hear me? Yes, now we can hear you, Ronald. Yes. Okay. Study, sir, please continue. Please continue. So waste multi-layer packaging is another problem. If you toss a bottle of the PET outside, it will be immediately picked up by the rag pickers or any. अगर आप इसको बाहर फेंकते हो तो सड़कों पे यही कूड़ा पड़ा होता है सब जगह पे। हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं, वेपर्स खाते हैं, सब कुछ। जंक फूड की तो हमने लिमिट क्रॉस कर रखी है अपनी कंट्री में, तो बच्चे भी यही खाते हैं सबसे ज्यादा। तो ये तो बंद नहीं हो सकता है, कम हो सकता है डेफिनेटली हमारी ईटिंग हैबिट से, बट ये वेस्ट जो जाता है इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इट हैज ए मल्टीपल लेयर, 3, 5 और 7, और मे बी द इवन बिगर स्ट्रक्चर। आउटर लेयर जो है प्रिंटेबिलिटी के लिए होती है, डिफरेंट पॉलीमर्स की है। अंदर की लेयर जो है उसमें एल्यूमिनियम कोटेड रहता है, क्योंकि मॉइस्चर और ऑक्सीजन बैरियर प्रॉपर्टी चाहिए। फिर सबसे अंदर की लेयर जो होती है हीट सीलिंग के लिए होती है। तो जब ये डिफरेंट सिस्टम मिक्सअप हो जाते हैं तो इट बिकम्स ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इसको आप मैकेनिकली प्रोसेस नहीं कर पाते। कुछ लोग इसे एक्सट्रूडर में डाल के इसके ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बड़ी वीक रहती है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डेवलप्ड अगेन ए केमिकल प्रोसेस which can recover the raw plastic out of it, and once you recover the raw plastic you can further segregate it, and you can use it for certain operation where it cannot be used. And even we can play with the this mixed multi-layer plastic without the removal of the aluminum layer also, and we have the technology to use it by manipulating the interface between the different layers. So we can do that complicated operations also. So we can use it as a structural material as shown in the first slide, or we can use it as a precursor for making the liquid fuels. Our sister lab Indian Institute of Petroleum has a technology where they can treat the clean plastic and convert it into the liquid fractions, gasoline, diesel, LPG, or maybe the other chemicals, depending upon which kind of catalyst they are using. And they have a very good success rate and very good efficiency, more than 60 to 70% fuel to liquid, plastic to liquid conversion. So if we delaminate our materials and clean it out of the aluminium, which act as a poison at the catalyst time, so we can easily convert it to the catalyst. So we can easily convert it to the fuel in their reactor. So that is one such possibility. Definitely plastic can be converted into the gasified inside the gasifier into the other fuels, and hydrogen in one such case, which we are doing in association with our sister lab Simfer, that works on the fuel and gaseous hydrocarbons related research. And then we can make certain structure out of it, and we can make the barrier type of material. When I say the barrier means something which can stop. Either it's a mechanical barrier to stop, so it's a more or less like a molded structure which can act as a wall, which can act as a physical barrier. It can act as a noise barrier also if you tailor the properties of the material, and it can act as an electromagnetic barrier also if you can tailor the properties of the material. So that's what exactly we have achieved. And road laying additive, it can also be used as an additive in road laying, but it is not as simplified. You cannot simply add it to the road with along with the other additives and it becomes the road laying additive. You need to add certain material, that is our proprietary material. We know what can be added, that is a compatibilizer. ये सिमिलर ऐसा ही है जैसे कि दो लोग होते हैं, वो अच्छे फ्रेंड नहीं होते, एक थर्ड उनका कॉमन फ्रेंड आता है और उनके बीच में अच्छे से ट्यूनिंग हो जाती है और काम रिजॉल्व हो जाता है। दोनों के अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लेकिन साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड या अच्छा ऑफिसर या अच्छा इंटरफेस उनसे वो काम करवा लेता है। तो ऐसा ही काम यहाँ पे हम लोग भी करवाना जानते हैं, और शायद हम लोगों के साथ अगर बाकी लोग जो यहाँ पे अगर जुड़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमें पता होंगी लेकिन उसका सोल्यूशन हमें नहीं पता। तो आप में से कोई वहां पे आके वो सोल्यूशन दे सकता है या इंटरफेस का काम कर सकता है। तो ये काम हम लोग, ये चीजें हम फ्यूचर में भी डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ किसका रोल आएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड ट्रांजिशन स्लो है हमारे सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर का शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है ई वेस्ट की। आजकल हम लोग सब लोग बहुत सारे गैजेट्स यूज कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ लाइफ दे बिकम द ई वेस्ट। ई वेस्ट कैसे बन जाते हैं, एंड ऑफ लाइफ कैसे हो जाता है? सो आइदर दे बिकम द माल फंक्शन or they become the obsolete because the further support is not available, and otherwise the style changes or the टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम लोग सब लोगों को नया मोबाइल फोन लेना है कि पुराने से मेरा काम तो चलेगा नहीं, अभी वो नोकिया 6600 लेके चलूंगा या नोकिया 1100 लेके चलूंगा जिसमें स्मार्टफोन नहीं है तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो उस कारण से भी ऑब्सोलेसेंस आ जाती है। तो अल्टीमेटली ये जाते कहाँ पे हैं,
काफी केसेस में लैंडफिल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन जब से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं तो कम से कम कलेक्शन इनका इंप्रूव हुआ है और कुछ रिसाइकलर्स भी आए हैं इसमें और काम भी कर रहे हैं। तो ई वेस्ट को अगर मैं बोलूं तो 3 कैटेगरीज में हम कैटेगराइज करते हैं। हम लोग जो काम करते हैं हम बोलते हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, जैसे कि सोलर पैनल्स आ गए या और रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम्स हो सकते हैं, कॉमन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, एंड देन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरीज वगैरह आ जाते हैं। इनका वेस्ट काफी इंक्रीज हो रहा है। सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन जो है बढ़ रही हैं। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के बाद से जो 2010 में स्टार्ट हुआ था, सारी कंट्री में सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो इसका वेस्ट कहाँ पे जाएगा, उसके लिए हमें सोचना है। ई वेस्ट, जनरल जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट। एंड देन द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जब हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसे नाइट में यूज करना है तो हमें एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस भी चाहिए। चाहे हम इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की बात करें तब भी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन चाहिए। स्टैंड अलोन सिस्टम्स की बात करें जो ग्रिड कनेक्टेड नहीं है तब भी एनर्जी स्टोरेज की। तो जब ये स्टोरेज सिस्टम्स होंगे तो इनकी लाइफ बैटरीज वगैरह की उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो हमें इनको भी जुडिशली रिसाइकल करना ही है या रीयूज करना है, उसके लिए हम प्रिपेयर रहने चाहिए। तो ई वेस्ट, अभी आजकल आप हेडलाइंस देखते हो, इतना ई वेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो हम ये रियलाइज कर लें कि हमें अपने ई वेस्ट को सबसे पहले वही प्रिंसिपल्स लागू करने हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिपेयर, रिसाइकल लास्ट में आ जाता है। तो मेरा जिस लैपटॉप से मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये 10 साल से ज्यादा, 11 साल से ज्यादा पुराना है, बट अभी भी आपके लैपटॉप के बराबर ही चलता है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी अपडेटेड रहता हूँ। कौन सी चीज कहाँ फिट हो सकती है इसको रिफर्बिश करवाता रहता हूँ, तो यूज करता रहता हूँ, इसलिए कि मैं कम से कम एक केस मेक करने के लायक रहूं। और इसके अलावा सेकेंड हैंड लैपटॉप मार्केट में भी जाता हूँ कई बार, मेरे पास सेकेंड हैंड लैपटॉप भी है, मैंने परचेज किया हुआ है, 1 महीने की वारंटी वाला है, 2 साल से तो कुछ हुआ नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो वर्थ फॉर मनी, आपके 1.5 लाख वाला लैपटॉप में 20-30 हजार रुपए में लाके यूज कर लेता हूँ कई बार, और अच्छा चलता है। तो जहां पे मेरा कहने का मतलब है, अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज को रीयूज या जो रिफर्बिश कर रही है अगर उसे भी हम लोग कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर पाए तो हमें करना चाहिए। हमारे एक्शन ही डिसाइड करेंगे, और ये चीजें हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे तो हम अपनी जनरेशन को समझा पाएंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर आ गई हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए हमें स्कूल्स कॉलेजेस की हेल्प लेनी पड़ती है। वहाँ बच्चों को सिखाते हैं, जब वो सीख जाते हैं तो वो अपनी फैमिली को सिखा देते हैं। सो मल्टी प्रोंग अप्रोच वी आर फोकसिंग। सो एनीवेज, हम लोग इसके अंदर जाते हैं, आपको जस्ट बताता हूँ कि अगर हम दिल्ली में जाएंगे, इफ यू गो टू द दिल्ली सीलमपुर में जाएंगे तो हर घर में ये काम हो रहा है वेस्ट। वो लोग वेस्ट लाते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, उन्हें पता है जला दो और उसमें से मेटल निकल आएगा, उसे यूज कर लो। तो बट दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। वाइल डूइंग दैट थिंग वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। इतनी हैजार्डस गैसेस निकलती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं जो गैसीफाई हो जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स भी होते हैं जो गैसीफाई हो जाते हैं, इवन लेड की फ्यूम्स चली जाती है। तो हमें क्या करना है कि उसमें थर्मोसेटिंग मटेरियल होता है। हम अगर पीसीबी की बात, सिंपल पीसीबी की बात करते हैं, तो पीसीबी में जो थर्मोसेटिंग है वो रिसाइकल नहीं होता। तो हम काम क्या करते हैं, हमने पीसीबी लिया, हमने उसके सारे मेटल्स हटा दिए ऊपर से, सिर्फ वह पीसीबी बोर्ड रह गया बेयर, जिसकी की सरफेस पे थोड़ा सा लेड था, अंदर उसके अंदर जो फाइबर ग्लास इपॉक्सी था या फिनोलिक था जो रेजिन था, और उसके बाद उसके अंदर कॉपर था। तो हमने इसको फिजिकली ट्रीट किया, क्रश किया, मेटल रिकवर किया फिजिकल मेथड से, फिर हमने इसको केमिकल मेथड से ट्रीट किया और हमें प्योर जो है पीसीबी का वेस्ट मिल गया। और जिस भी टाइप का पीसीबी का वेस्ट था उसके हिसाब से हमने इसको कार्बोनाइज किया, बड़ा अच्छा हमें कार्बन मटेरियल मिला, जिसको कि हमने फंक्शनलाइज भी किया और हमने इसको सुपर कैपेसिटर में भी डिमोन्स्ट्रेट किया, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया वाटर प्यूरिफिकेशन में, और ईएमआई शील्डिंग में भी किया, क्योंकि वहां पे भी पोरस मटेरियल चाहिए होता है। और हमारे एक स्टूडेंट ने अभी पीएचडी इसी टॉपिक के ऊपर, सिर्फ पीसीबी के ऊपर ही कंप्लीट करी है, अपनी पीएचडी सबमिट करी है। ही टुक दिस प्रॉब्लम, और बहुत डिस्करेजिंग हो जाता है जब आपको पता चलता है सब जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है, सब जगह पेपर पब्लिश्ड है, लेकिन जब आप एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे काम करने जाते हो तो आपको लूपहोल्स पता चलते हैं। और अभी ही हैज ऑलमोस्ट अबाउट टू पब्लिश वन पेटेंट आल्सो, एंड सेवरल पेपर्स आर इन द पाइपलाइन, क्योंकि पेटेंट के बिना वो होगा नहीं, तो वो भी पाइपलाइन में है। और ही इज एट द आरएमआईटी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, उसको फेलोशिप मिली वहां से 1 साल के लिए। ही इज कंप्लीटेड, he submitted his thesis at there, and NPL is about to submit. So that way it will not only give you outcome in terms of the technology that may be useful for the society, ये जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है ये हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं। हम हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे हैं, आप आइए हमारी टेक्नोलॉजी यूज कीजिए,
ओनली थिंग इज कि उनको कैसे देंगे वो थोड़ा सा अभी बैरियर सिस्टम में रह जाता है। सिस्टम कहता है कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारा बहुत कुछ लगा हुआ है और हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना, रॉयल्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें एज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स उन्हें कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो वो इंटरफेस कैसे हमारा बनेगा वो देखना है हमें, और उसके बाद सोल्यूशन जरूर निकल आएंगे। सो अगर हमने इसको सुपर कैपेसिटर में टेस्ट किया तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। मैं डिस्कस और ग्राफ दिखा के आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा आपका नहीं लूंगा, बट ये बताऊंगा कि हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, इंकरेजिंग थे। और इसके बाद इन्होंने इसी मटेरियल को लेके ये इन्होंने आरएमआईटी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा काम किया कि हम जो चार ले रहे हैं उसको हम कैटलिस्ट की तरह क्यों ना यूज करें। और उन्होंने मीथेन का कैटालिटिक डिकम्पोजिशन किया और देखा कि अच्छे अमाउंट में जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हो रही है उस चार के साथ जो उन्होंने मीथेन यूज किया तो उससे कुछ कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स भी बढ़ने शुरू हुए हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको कार्बन नैनो स्ट्रक्चर्स की तरफ, चाहे वो कार्बन नैनो ट्यूब्स हो या ग्रेफीन टाइप स्ट्रक्चर की हो, तरफ ले आएंगे और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में आप जानते ही हैं। सो मल्टी प्रोंग अप्रोच इज कमिंग विच वी आर इवॉल्विंग। तो ये भी हमारा जो प्रोसेस है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और होपफुली हम इसको फ्यूचर में मेटेरियलाइज कर पाएंगे। सो दैट वे वी आर वर्किंग अपॉन। फिर मैं दिखाऊंगा आपको बैटरी का, ड्राई सेल्स और लिथियम आयन बैटरी का बहुत सारा वेस्ट निकलता है। हमने इन दोनों को लिया, ट्रीट किया, कुछ इनमें से केमिकल एक्सट्रैक्ट किए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम इसे रिसोर्स देखते हैं लैब स्केल पे, और जब एक्सट्रैक्ट किए तो उन सॉल्यूशंस में से हमने एक मटेरियल लिया, कार्बन मटेरियल लिया, जो कि जनरली ज्यादा यूज नहीं होता। उसको हमने कन्वर्ट किया हाई एंड मटेरियल, 2D मटेरियल, दैट इज द ग्रेफीन। ग्रेफीन से हमने ग्रेफीन ऑक्साइड बनाया, जिससे हमने कोरोशन में सॉल्यूशन दिखाए। ये ग्राफ दिखाता है। उसके हमने यूजेस दिखाए एंटीस्टैटिक पैकेजिंग मशीन में। अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो सेमीकंडक्टर मिशन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग की भी बात होने लगेगी स्ट्रांगली। अभी तक हम नहीं बात करते स्टैटिक डिसिपेटिव पैकेजिंग, तो वो हमने मटेरियल बनाया। इसके अलावा हमने इसको कोरोशन में दिखाया। कोरोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा हमारे मटेरियल्स का, स्ट्रक्चर के लॉसेस को, हेरिटेज हमारे लॉसेस हो जाते हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स में लॉसेस हो जाता है। तो उनको प्रोटेक्शन के अलावा हमारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में ये रोल प्ले कर सकता है। और अगर हम मटेरियल्स और उन एक्सीडेंट्स को, स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मटेरियल के रिसोर्सेज थे उनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। मटेरियल प्रोसेसिंग करके जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर बनाने थे उसमें एनर्जी कंजम्पशन से उनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट्स रिजॉल्व हो जाता है। तो दैट वे corrosion इज ए लिंक प्रॉब्लम दैट वी आर सोल्विंग अगेन विद ए वेस्ट मटेरियल। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी दिखाया हमने, इसके एरोजेल भी बना लिए, विच इज ए अल्ट्रा लाइट डेंसिटी मटेरियल, 3D असेंबलीज ऑफ 2D मटेरियल्स। और आप देख सकते हो कि इमीडिएटली ये क्लीन कर देता है वाटर को। अगर हम इसको डाला, कुछ सेकंड के अंदर शेक किया, तो अभी हम इसके कैंडल फिल्टर्स बना रहे हैं और होपफुली वी विल एबल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। सो हमारी कोशिश ये है कि जितने हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इसे हम मार्केट में लेके जाएं। एंड व्हेन यू वांटेड टू गो टू द मार्केट, यू नीड टू फेस द मार्केट चैलेंज, you need to face the many, you need to address many questions also. So we are learning, we are uh, evolving, we are improving ourselves, and we are ready to face the challenging also, and many times the criticism also. Wherever we are wrong, somebody comes, correct us, tell us this is the right path. They may coordinate with us, they may combine with us, become the part of the team. तो हमने तो सोसाइटल सॉल्यूशन करना है, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक दैट वी आर सिटिंग एट द वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन and we have a bigger responsibility apart from decorating. Everybody thinks about, okay, we will decorate our CV, we will earn this medal and that thing. But I am telling you, if we are not healthy population of, I don't want to highlight the population of our country, but we know that if we are having the so many resources, we are having the so much of bank deposit, we have the so much of you can say that wealth with us. If in all of us not healthy, if our environment, the other people are not healthy, ecosystem, the entire thing will collapse. So better we appreciate each other, compliment each other, and see where we can fit in, and we can come out with a different kinds of solutions. So again, now moving back, सोलर पैनल्स की हम बात करते हैं। सोलर पैनल अगेन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बट अगेन इट फॉल्स इनटू द केस ऑफ द मल्टी लेयर लैमिनेट। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो लैमिनेट टुगेदर
होती हैं, और इसी कारण से इसकी रिसाइकलिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोग मल्टीलेयर प्लास्टिक में काम करते हैं दूसरे में। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी था और हमने सोलर पैनल की रिसाइकलिंग का छोटा लैब स्केल प्रोसेस डेवलप किया, और ऐसा करते हुए एक स्टूडेंट को पीएचडी भी कराई, और एक स्टूडेंट अभी ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है, और वो अभी 14th को ही आरएमआईटी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को बार बार बुला रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। तो एक स्टूडेंट ने पीएचडी करी, वो भी स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रेलिया में एक इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है अभी सोलर पैनल रिसाइकलिंग में। तो अभी ये काम बाहर की कंट्रीज में हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे अभी इसके कहते हैं ना कि स्केलेबल सॉल्यूशंस है नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है। तो ये काम हम अब इंडिया में करने की कोशिश करेंगे सबके साथ कोलैबोरेशन के, ताकि हमारे सॉल्यूशंस लोकल प्लेयर्स को हेल्प कर सके, लोकल इंडस्ट्री जो है इम्प्रूव में इम्प्रूवमेंट आ सके। और वहां पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को भी समझते होंगे, और ये भी जानते होंगे कि जो गैप्स हैं बीच में, जो पॉलिसीज में गैप्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स हैं मार्केट में सॉल्यूशन निकालने में, आई थिंक यू मे बी एबल टू प्रोवाइड solution for those gaps also, so that way we are always ready for hand holding। तो इस solution को जो हमने प्रोवाइड किया था, इसके बाद हमने बिगर सोलर पैनल से काम करना शुरू किया और एक प्रोसेस डेवलप किया, और आप देख सकते हो कि हमने सारे कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट रिकवर कर लिए। जनरली क्या होता है कि इंडस्ट्री में बर्न करके वो प्लास्टिक लेयर्स को निकाल देते हैं, जो लेमिनेट होता है, एडेसिव होता है, ईवा होता है, हमने उसको भी रिकवर कर लिया और उसका भी सोल्यूशन हमने निकाला है। तो आई विल शो यू। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोलर पैनल्स के साथ इंडिया जैसी कंट्री में कि डस्ट डिपोजिशन हो जाता है। क्लीन एनर्जी का सॉल्यूशन लगा दिया, डस्ट है, जब पहला ही प्राइमरी प्रोसेस सोलर एब्जॉर्प्शन ही कट ऑफ हो गया तो आप क्या करोगे, क्लीन कैसे करोगे। तो हमने लोटस इफेक्ट को देख के कुछ सेल्फ क्लीनिंग कोटिंग डेवलप करने की कोशिश करी, और जब हमने कोटिंग डेवलप करने की कोशिश करी तो हमने कुछ सिलिका और दूसरे पार्टिकल्स हमने निकाले और उनको फंक्शनलाइज करके कुछ नैनो मटेरियल्स बनाए, जिससे हमने कोटिंग्स बनाई। और ये नैनो मटेरियल जो सिलिका जो हमने निकाला था, ये हमने कहीं से नहीं निकाला, या तो हमने वेस्ट मटेरियल से निकाला था जो मैं बता रहा था, या फिर हमने सोलर पैनल से जो अल्ट्रा हाई प्योरिटी सिलिकॉन निकलता है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन हमने निकालने की कोशिश करी। और आपको पता है सोलर पैनल अभी वेस्ट बहुत कम क्वांटिटी में आ रहा है, आप उसको कहाँ यूज करोगे, कैसे बिजनेस प्लान खड़ा करोगे। तो हमें ये लगा कि अगर हम उसको कोटिंग्स में डाल देते हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कोटिंग इज सफिशिएंट एनफ टू टेक केयर ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ एरियाज। तो हमने उस छोटे से सॉल्यूशन को एक बिजनेस प्लान की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, और ये एक स्टूडेंट जो अभी ऑस्ट्रेलिया गया है वो इस पे काम कर रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कोटिंग्स हैं ये थोड़ी सी ड्यूरेबल और हो जाए। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल, यस इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी अंडर द इन्वायरमेंटल एमबीएस कंडीशन इज ए स्टिल इशू, बट क्योंकि हमें उसका कॉज मालूम है तो उसकी इंप्रूवमेंट की तरफ कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो अगर चलता है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, शायद हो सकता है ये रोटेट हो जाए, देयर वाज सम इशू इन द प्रॉब्लम, बट आप देखेंगे कि एक पैनल है जिसके लेफ्ट साइड पे कोटिंग नहीं हुई हुई और राइट साइड पे कोटिंग हुई हुई है, दोनों साइड पे डर्ट है। जब हम इसे क्लीन करते हैं तो कैसा बिहेव करता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद ये अगर वीडियो चलता है तो आप देख सकते हैं कि हम इस पे अभी वाटर ड्रॉपलेट डालते हैं। शायद ये वीडियो मूव नहीं कर पा रहा है। एनीवेज हम इस पे अगर वाटर ड्रॉपलेट डालते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट इसके ऊपर रहती है, क्योंकि पैनल जो था वो हाइड्रोफिलिक था, लेकिन हमने जो कोटिंग करी उसने इसको सुपर हाइड्रोफोबिक बना दिया, तो एकदम से डस्ट जो वाटर ड्रॉपलेट पड़ती है वो रोल डाउन होती है और अपने साथ डर्ट ले जाती है। तो दिस इज वन सच सॉल्यूशन दैट वी हैव एक्सटेंडेड बाय यूटिलाइजिंग द वेस्ट। अब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं। हमारी कंट्री में वेस्ट टू एनर्जी के बहुत सारे प्लांट्स हैं, और आपको सबको पता है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तो हमने लगा दिए, लेकिन वेस्ट हमारा कैसा आता है, स्वीडन या स्विट्जरलैंड या यूरोपियन कंट्रीज जैसा नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आए दिन न्यूज आती रहती है, अभी भी आ रही थी कि वेस्ट जो प्लांट्स है उससे एमिशन जो निकल रहे हैं दैट आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर द रेजिडेंट हु आर लाइंग लिविंग आउटसाइड। सो मैं अभी काफी पहले डेनमार्क गया था, वहां पे मैंने एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट देखा, और मैं बताना चाहता हूँ कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इतने अच्छे से बना रखा था कि ऊपर से सिर्फ फ्यूम्स निकल रही थी इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर, व्हाइट कलर क्लीन कलर वाटर वेपर्स, and they are utilizing each and every kind of waste, and they are generating the electricity, and they are including, because they are a cold country, so they are using the heat that is being generated as a pumping medium to provide the heat to the entire country, entire city of the Denmark. And then they have constituted the building in such a manner that outside it looks like a very beautiful structure. They have the slope over which they are doing the skiing also, and they have the largest wall climbing facility over the structure also.
आप उसके बाहर जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कोई एमिशन नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई नॉइस एंड वाइब्रेशंस नहीं। तो इस तरीके की फैसिलिटीज हमें अपने सिस्टम के अंदर लेकर आनी पड़ेंगी और हमें वहां से सीखना पड़ेगा कि कैसे ये सिस्टम्स हमारे लोकल वेस्ट के साथ काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो काम करता है तो मैं शायद आपको एक वीडियो दिखा पाऊंगा, अगर ये काम करता है। यस, so this is the facility I am talking about. A truck is going inside the facility. See, it is taking the waste along with it. ये इन्होंने बड़े बड़े साइलोज हैं, उसमें वेस्ट को डंप कर दिया। अब ये साइलोज के अंदर वेस्ट आ गया है एंड देन दे हैव द रोबोटिक आर्म्स which is picking up the waste and putting inside a furnace. So they are managing it and monitoring it. And when it goes to the furnace, there are a big kind of furnaces. So you can see the where the temperature goes to the very high conditions as a complete combustion takes place. And this entire factory and piping system is nothing. It is a waste heat that is being generated, heat recovery system, and the emissions that are being generated, they are being channelized through these things and they are stored inside the containers. And then they are using waste energy capturing, waste energy, and I must say the waste emissions capturing technologies, that is the carbon capture, storage and utilization systems. And you see the only water vapor is coming out of this. And how beautiful this structure looks like. There is a beautiful slope over it. Somebody is doing the skiing. And they have a tallest wall climbing structure over this thing also. So what I wanted to convey that this plant has a efficiency of over 100%. I'm not going to answer how over 100% efficiency can be possible. Yes, it is possible if you manage the things in a proper manner, if you manage the things in a very well organized manner. So just look into it and then see. What I was talking is not actually a word which is beyond the nature's principle of 100%. How it is happening, just go into their site, and still if you have any doubt you can come back to me and we can always collaborate together to come out with a waste to energy plant that actually suit our country's requirement. I am telling you, if we can do this, we will be much more efficient than them, because they have altogether different kind of climatic conditions and we have a all different kind of system. I'll show you one last slide. We have seen there is a symbiotic kind of industrial zone also, in which they have placed several industries, pharma industry together, in which the waste of the one industry was acting as a resource for the other industry, whether it's a waste heat, whether it's a raw waste that is being generated as a raw material for other industry, or waste waste energy also. So they were sharing those things. So transportation cost, material purchasing cost, everything have been reduced to the minimum. So minimum thing is coming out of this system. So can't we develop these kind of specific zones in our specialized industrial zones? So we have the ecosystem also, we have the waste to energy plant also, we have the effluent treatment plant also. So by if we can do that thing, I think we can achieve what no one in the world has achieved. And I am telling you, wherever you go, they have the best of the technologies, they have the best of the things, but best of the brains are always going from the India. And if you talk about the local solutions, I think you talk about any solution, they are present within our systems. There are people who can fix a rim of the best of the, you can say that competitive automobile which is competing at the international level. They can fix the rim just by fixing and using a hammer. They just place the hammer, but they have the experience, they know how to and where to hit the hammer, and they charges for that thing. And many such people may be sitting, you may find them sitting in the Purani Delhi, Jama Masjid, maybe Kashmiri Gate, maybe in the Bawana area also, or any other area of the country also. तो सॉल्यूशन सारे अवेलेबल है, हमें सिर्फ उनको जोड़ना है, उनको बताना है कि क्या करना है। फिर मेनी टाइम्स अगर हम उनको राइट प्रॉब्लम बताएंगे तो क्या पता सॉल्यूशन भी वो लेकर आए, और वो सॉल्यूशन उन जगह पे भी नहीं हो सकता, विलेजेस में भी हो सकता है। तो हमारी बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में काम करें। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात हो रही है, तो हम ये ध्यान दे दें कि जब हमें ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए तो उसके स्टोरेज और जनरेशन के ऊपर भी हम काम करें। जो हमारी
जो स्टोरेज के लिए हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम जो है वाकई में इफेक्टिव होना चाहिए, वरना हाइड्रोजन इज ए वेरी डेंजरस गैस. इट बिकम्स ए काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, ए बॉम्ब इटसेल्फ. और हाइड्रोजन जनरेशन की जब आप बात करेंगे तो वाटर, क्लीन वाटर चाहिए. तो क्लीन वाटर क्राइसिस हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं जो सीवेज वाटर से हाइड्रोजन बना दे? सो थिंक अबाउट ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, देन ओनली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वरना ग्रीन हाइड्रोजन एक नाम रह जाएगा. और अल्टीमेटली बिगेस्ट प्लेयर्स जो है वो बाहर से ही आ रहे होंगे. हमारी कंट्री में बहुत कुछ हो रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट थिंग, बट वी ऑलवेज कीप अवर ईयर्स एंड आईज वाइड ओपन टू सी कि हम नेचर के सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कंप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं. तो ये चीज का हम ध्यान रखें. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि कोविड टाइम आया था तो हम लोग लैब में रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, लेकिन हम बैठे नहीं. हम उस टाइम पे लैब में पहुंचे, हमने उस टाइम पे देखा कि सैनिटाइजर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. तो हम लोगों ने क्या किया कि छोटा सा सॉल्यूशन था, जितने हमारे पास लैब में केमिकल थे हमने सैनिटाइजर बनाया और सबने, जितने कम्युनिटी वर्कर्स थे, जो भी वहां पे स्टाफ था और बाकी लोगों को सैनिटाइजर बना के हमने बांट दिया और WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया था. तो हम सेवा करने के लिए, हम सोसाइटल सर्विस करने के लिए हमेशा तैयार रहे. ये नहीं देखे कि हमें मेडल मिलेगा. और ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है, कहीं गया भी नहीं. बाद में हमने इसको प्रोपेगेट किया तो सब लोग सैनिटाइजर बना रहे थे. तो इस तरीके के हम सॉल्यूशंस को एक्सटेंड करें. ऐसा नहीं कि, आई एम सॉरी टू से, आई हैव सीन दैट द crude alcohol, because that is a ethanolic in nature or alcoholic in nature, is being served inside the bottles as a sanitizer. तो ये काम हम ना करें, उससे बहुत गलत मैसेज जाता है, बहुत गलत सॉल्यूशन हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं. वो काम हम ना करें और राइट सॉल्यूशन दें. इसमें और भी केमिकल्स डलते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड डलता है, उसको अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में डाले तो हमने वो भी डाला और इसका हमें कोई नुकसान नहीं हुआ. जो हमने सैनिटाइजर बनाया, ना केवल हम अपने यूज के लिए बना रहे थे, आज के डेट में ये टेक्नोलॉजी हम अपने दूसरे मटेरियल को विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ सैनिटाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं. और अभी उसको डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे हम किस चीज पे काम कर रहे हैं, बट अगर वो काम आप लोगों के ब्लेसिंग से या कहीं पे जब भी सपोर्ट की जरूरत होगी, विल रीच बैक टू यू. सो एक बहुत बड़ा नेशनल काम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेस्ट आते हैं जिनको के सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ती है. सो एनीवेज, हमने कोरोना टाइम पे एक हमारे पास छोटा सा 3D प्रिंटर था, हमने प्रिंट करके बहुत सारे फेस शील्ड भी बनाए थे. मैं नहीं कहूंगा कोई रॉकेट साइंस है, कुछ भी है. अगेन, ये बहुत सारे कम्युनिटी वर्कर को दिए गए और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया और ये काम करते हैं. इन्होंने उस टाइम पे लाइफ सेव करी है, क्योंकि फेस शील्ड एक छोटा सा इक्विपमेंट था, एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल बन गया था जो कि मिल नहीं रहा था. तो जो चीज लाइफ सेव कर सकती है किसी भी टाइम पे, और मोल्डिंग ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं थे, तो वो चीज कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि इफेक्टिव है. तो कभी कभी छोटे सॉल्यूशन भी काम कर जाते हैं. तो हमें, व्हाट आई वांट टू से दैट, हमें कम्युनिटी सर्विस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है. और हमें कोई मेडल नहीं लेना है, हमें कोई अवार्ड नहीं लेना है, हमें कुछ नहीं करना. हमें ये देखना है कि अगर हम कुछ चीज सर्व कर सकते हैं और वो इनर सेटिस्फेक्शन जो आपके साथ रहेगी और जो फीलिंग आपके साथ रहेगी, वो आपको इतनी एनर्जी दे देगी कि शायद आप फ्यूचर में और कामों को और अच्छे तरीके से कर पाओगे. तो प्राइमरी हमारा मोटिव वो होना चाहिए. और मैं आपको लास्ट 2 स्लाइड्स में फिर से बताना चाहूंगा कि जब आप कोई भी काम करने जाते हो, कलाम सर भी कहते थे और कहते हैं कि हमें सॉल्यूशन का, उस चीज का पार्ट बनना पड़ता है. मेरी लास्ट स्लाइड के साथ, ये मैं लास्ट 2 स्लाइड के साथ खत्म करूंगा. मुझे पता है मैंने काफी समय ले लिया है. ऐसा हम वेस्ट की जो लिटरिंग है, ये सिचुएशन ना हो तो हम अपने घर पे काम करते हैं. माई मदर डेली गिव्स मी दिस ऑर्गेनिक सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट. मैं इसको लेके जाता हूँ, उसको कंपोस्टिंग करता हूँ. और जो कंपोस्टिंग का एग्जांपल आपको दूंगा, मेरे टेरिस गार्डन में जब वो कंपोस्ट यूज होती है तो ना केवल ऐसे फ्लावर्स लगते हैं, मेरे टेरिस गार्डन में इस तरीके का दशहरी मैंगो भी लग जाता है. और उसका साइज आप देख सकते हो. उसका टेस्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट वो टेस्ट मैंगो के टेस्ट से डिफरेंट होता है. आपको पता चलेगा कि मैंगो का टेस्ट एक्चुअली कुछ और है, ऐसी वेजिटेबल का टेस्ट कुछ और है. घिया, तोरी, टिंडा जो हम नहीं खाते हैं, एक्चुअल टेस्ट इज समथिंग एल्स. So actual okay. Oh, sorry. Somebody has written that I come back to the Hindi. So what I was saying, that we segregate the waste at the domestic level also. I am complying my individual societal responsibility. Organic waste we compost, and when we use it inside our gardens, so we could able to grow the particular variety, the cherry mango, in our terrace garden itself. Just you can see the size and taste. I cannot explain you, which is far better. I mean, you will realize that what is the real taste of the mango.
or any other fruit or vegetable which we used to avoid, whether it's any other vegetable that we are generally not, I mean, consuming, or a case of the fruit like mango. Because what will happen, organic gives altogether different taste, and non-ripening it through the conventional solution using the ethylene gives it altogether different taste. So we are actually people living in the city may not be knowing the real taste of the things also. So this is the one success story. Then I make certain kind of molded objects, and then reuse certain elements to make something to motivate my kid also, so he start participating in it. And many times my home people say that these multi-layered things you are talking about, you are littering our home, where we can keep this. So I'll say that you just take the material, stuff is inside these kinds of boxes, and if you apply certain compression pressure, you can store this much of amount of material within two boxes. That can be stored, that can be, if littered, it can at least fill up a 300 and 400 square yard of the 300 or 400 uh, square meter of the material, or square feet of the area. So what exactly is happening, you are providing the solution. They ask me the this is the problem, I provided them the solution. Now they are managing this waste also, so I am taking from them. Similar thing is I am doing it the community level. So this is one such example. Last example I want to give, that we generally have the ceremonies, we have the bhandaras, we have the offerings to the people on the festivals, and we many times we have the conferences on the theme of the waste management, and at the end we have the waste, so much of the waste. So what exactly we people are doing? Are we really conscious about the things? And especially we provide the solutions like disposables as a solution to the plastic waste. But what exactly is happening? This disposable becoming the big headache. So what we have done, we have involved the student also. They come to our institute. They have spent 9 days at the institute. They have identified, collected the waste, segregated the waste, and they found that the disposables are the biggest problem. So we just give the message to everybody that this waste can be again managed by minimizing the use of the disposables. We may again use the reusable type of cutlery or platelary items like plates. Maybe the SS plates can be used again. कोई हार्म नहीं है अगर हम उसको यूज करते हैं. हम इतने हाई प्रोफाइल हो गए हैं कि हम अब एक बॉन चाइना की प्लेट में खाएंगे और डिस्पोजेबल्स लेंगे तभी हम हाई फाई लगेंगे. अगर हम सेम प्लेट को यूज कर लेते हैं, वेयर इज द हार्म? So that is the problem we have demonstrated. I personally went to the stall. We asked people to segregate their food waste. अगर कुछ left over food है उसको separate कर दीजिए, टिश्यू पेपर अलग डालिए, बाकी जो आपका जो plates है उसको अलग डालिए, and we could able to clean the space within 15 minutes, 15 to 20 minutes after the event. You see the situation. This is the. तो अगर हम इसको मैनेज करें, और ये फूड वेस्ट हमने यूज किया, हमने इनिशियली एनिमल्स के साथ यूज किया, बट डेली वी कैन नॉट गिव इट टू द एनिमल. So we have planned to set up the biodigester. We are in the process. कैंटीन का कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट उसी से पूरा कर लेंगे. तो हमें सोचना पड़ेगा और हमें सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशंस आएंगे. आप एक यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे कि मैं अपना मेरा थंब दिख रहा है. ये थंब कटा हुआ है क्योंकि मुझे एयरक्राफ्ट में फूड मिला था जिसमें एल्यूमिनियम फॉइल थी. मैं खोलते खोलते ही मेरा हाथ कट गया, और मैं उसे क्लीन करके रखता भी हूँ वेस्ट को. सो यही वेस्ट जब हम लोग इधर उधर डाल देते हैं, तो ये वेस्ट जो एनिमल्स को, कैटल्स को, जिनको कि छोड़ना ही नहीं चाहिए स्ट्रे एनिमल्स को, वो उनको भी नुकसान करते हैं. और ये जो रैग पिकर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं. मेनी टाइम्स व्हेन दीज थिंग्स आर इन्फेक्टेड, तो उनको बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं. उनको तो सेग्रीगेट करना है, वो तो इनफॉर्मल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो प्लीज कंप्लाई अवर इन्वायरमेंटल सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी काम हो पाएगा. और ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ काम किया, उसी वेस्ट से इन्होंने रीयूज करके, रिफर्बिश करके और बहुत सारी चीजें करके एक डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर बनाया, और हमारे डायरेक्टर सर को दे दिया. एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि विद इन 9 days दे नो अबाउट द प्रॉब्लम, they know about what exactly is the different kinds of waste. They quantify it and they made something out of waste, and they utilize the molded part also. They have carried out the reuse, they have understood the reuse part also, and they carry forward the bigger message कि अभी वो जो YouTube साइंस देखेंगे वहां पे उनको आइडिया लगा लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है. So अगर 9 दिन में वो लोग ये काम कर सकते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. तो ही अप्रिशिएटेड दैट थिंग.
So that's a bigger part. ऐसे ही हमारे स्कूल में हमारे वहाँ पे ओपन डे हुआ था, ये कुछ स्टूडेंट्स आए थे, इन्होंने बहुत कुछ देखा। एक छोटी सी एक वीडियो है, अगर ये चलती है तो शायद नहीं चल पाएगी इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो। तो इन्होंने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत कुछ आइटम्स बना रखे थे। अभी मैं लास्ट उस पे आऊंगा कि सस्टेनेबिलिटी ग्रिड क्या है। सस्टेनेबिलिटी ग्रिड सेज के सारे इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं, एनजीओ है, गवर्नमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर ये सब जुड़े रहेंगे आपस में तो काम अच्छे से हो पाएगा। और इसमें जनरल पब्लिक को भी जुड़ना है। जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे घर में वेस्ट मैनेज होता है, लेकिन अगर एक भी पर्सन उसको मैनेज ना करे, हो जाता है कभी कभी लैप्सेस हो जाते हैं। मैं जाता हूँ और मेरी ये हैबिट है कि मैं खुद इन्वॉल्व रहता हूँ, तो कभी कभी मैं डस्टबिन भी खोल देता हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट, देखता हूँ उसमें कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है तो उनको बोल देता हूँ कि मैंने इसमें आज हाथ डाल दिया, मैंने इस वेस्ट को निकाला है और यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर नेक्स्ट टाइम से ना हो तो। एंड दे कंप्लाई कि गलती हो गई है, ध्यान नहीं रहा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनका हाथ अपने आप जाता है। बॉक्स है डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ, उसमें मेडिसिनल वेस्ट अलग जाता है। So what will happen, they segregate at their level. If the medicinal waste is there, they put it inside that box. If it's a multi-layer plastic waste, they have the different box. If it is a carton and other things, they segregate it and give it to the sweeper separately. If it is a organic waste, they give it to me. I'll compost it on the daily, either at my premises or at my office. So I mean, it is a win-win situation. So individual has to play their role. They should follow the principle of individual waste management, individual waste generation. So reduce their consumption, reuse their material which they considered reached its end of life by certain mechanism. One of them is the composting, if it happens to be the case of the organic material. And then maybe they can extend the life of their products by refurbish or repair wherever it is possible. अगर खुद यूज नहीं करना तो किसी दूसरे को दे दें, उसको सिस्टम में चैनल में मैक्सिमम वे में यूज करें। सोलर पैनल इफ बिकम्स आउटडेटेड और एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ मींस जब 80% से नीचे एफिशिएंसी आ जाती है, एंड ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड एंड ऑफ लाइफ। सो it is still giving the power. It may be used for certain other stationery, or it may be used for some other application where it can provide the solution. The automobile batteries, if it becomes you can say that less effective in terms of the storing, still it can be repaired or it can be used as such for the stationary application. तो हम reuse, reduce और refurbish repair की power को कम ना समझें. We should not underestimate its power, and we should involve ourselves, and all the stakeholders should form a certain kind of grid which is well connected, and then only things will come out. We should change our mindset. We should not call the waste generator as a kachre wala, or waste generator is actually we should realize that we are waste generators, and then we should realize that they are actually the sweeping staff. So they are safai walas. In Hindi it is called safai wala, or they are the sanitization workers. So cleanliness is a collective responsibility. I always say, let us play our part so that they can do their job in a more effective and more healthy manner. And once our environment becomes healthy, tabhi we all become the healthy. We talk about the 400 AQI or something. I am again saying you, if we change our behavior, we change our waste management and utilization habits of the resources, I think part of the problem will be solved. You can set up the example from the Delhi itself. We always talk about the case of the Indore. Indore, they have cleaned the landfill. They have done very good things at the Indore. But Delhi has a bigger problem, but we have a bigger case to, I mean, prove that we can do it. So I give you an open challenge. If anybody wants to come for the brainstorming and we can discuss, we are always, you come to me and we will discuss about the problem in the form of a stakeholders meeting, and then we'll come out with the solution where each person can fit in the framework. So I just want to say that make amends for our past. जो past में हो गया, whatsoever has happened, act responsibly and revive the nature, because we have only one planet Earth. And this picture shows that one of the shirt I was talking about that I purchased from the second-hand market. It is a Pepe Jean branded shirt of 3,000 rupees. I purchased at the 150 rupees. No problem is it, and nobody recognized. Even when I wear it with a proud and certain event, many people come to me and they said that it looks very fine, and they complimented me, and then there I talked about the truth of that thing. So I supported that fellow who is, I mean, providing these kinds of
textile refurbishment or textile recycling or rechannelizing work. So I support that fellow. There is no harm in supporting each other. So this is the last thing. And if you still any of you find any problem with this picture, so please be ensured that is not with the shirt, that is problem maybe with my personality. So with that, I just want to just show you that this is our team. Anuj has already done the PhD work on the PCB. He is at the RMIT University, Australia, submitted his PhD. Neha has done work at the NPL itself. She has resolved the problem of the corrosion by using the different materials. Rahul has done the PhD on the doing the PhD on the solar panel recycling, and he is again raised to the RMIT University, Australia. He will work for 1 year, then submit the joint PhD. Manpreet and Bhavna, they are from the environmental science. They are relatively new persons, but they are contributing towards the cause. So whatsoever we are developing, we are always keeping in mind that these technologies should reach to the society. It should not remain the part of my personal CV or any other kind of award that I may be getting. So we are taking it very seriously, and I'm asking them to take it forward in the form of a certain kind of enterprises or something. And whatsoever efforts are required for that thing, I always ensure them there is no good people within the ecosystem. They will come forward. आप एक कदम, you just take one step and they will follow the 100 steps towards you, and they will support you like anything. So with that, I just want to thank you for your kind attention. I hope I may not make you to sleep like this. And if I have made you, so I again want to apologize. Thank you for your kind attention. If I there any question, I'll be ready to answer. Thank you. Thank you very much, sir, for your brief and very interesting presentation. And it was very interesting topic, how to make this waste in the resource. Thank you very much. Sir, I would like to request you to kindly unshare your presentation and if possible, make your video on so that we can take few photographs for our social media platforms. Give me just a minute. And we will also put this video on the website on our website as well as in the YouTube channel with your permission. Okay, sir. And kindly share this presentation after this So program. We can share it. I'll do it. Thank you. We will share it with all the participants. With this, can we close the meeting? Atulji? Yes, I'm doing it. Okay. I Thank think you, sir. now the presentation is unshared. Not yet. Not yet. Let me see where is the issue. See what happens. Let me tell you very Yes. frankly. While doing that thing, sometimes we are good at other things, but these technological glitches always happen at our end. Absolutely. So I don't know. Absolutely. I don't know. I think there should be a serious training about it. If I always considered myself as a tech savvy person, but I always fall trap to these kinds of problems. Thank you. Thank you very much, sir. With this, I would like to thank all the participants for having this part of this program. We will meet next week with the next topic. With this, I would like to thank